ऑन कर लो सारे। Okay, let me start the screen share. Minimize, maximize को करते हैं बंद। ओके, तो मैंने क्या कहा था? मैं कहा था हम दिखाएंगे वो सब्जेक्टिव है if and only it is, if and only if, मतलब T is subjective if and only if T star is bounded below. तो एक साइड हमने प्रूव किया, अब हमने assume किया that it is bounded below, assuming that we are assuming that there is some beta positive. इनको एडमिट करते हैं। We are assuming, फिर से आ रहे हैं। Okay, I'm assuming that it is bounded below T star, and by that I mean there is some beta positive. Norm of Y star. Recording रुक गई क्या? Just a minute. Recording चल रही है? तुम्हें क्या आ रहा है स्क्रीन पे? Hello मेरी रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। अच्छा चलो ठीक, मुझे लगा कोई बटन तो नहीं दब गया। तो norm of Y star is less than equal to norm of, ये मैं assume कर रहा हूँ for all Y star belonging to this capital Y star, and I'm claiming that claim जो मेरा है that if I have Y belonging to Y such that norm of Y is less than equal to 1, then there exists some X with norm of X is less than equal to 1 by beta, and norm of Y minus Tx is strictly less than half. तो ये हमारा assumption है. Now assume to the contrary. Suppose that is not the case, तो क्या होगा? So there would be a contradiction. Suppose that is not the case, तो क्या होगा? Then there exists some Y naught. Then there would exist some Y naught belonging to Y with norm of Y naught less than equal to 1 and norm of Y naught minus T of X जो है वो greater than equal to half है for all whenever norm of X is less than equal to 1 by beta. और इसी को मैं इसी तरह से लिखता हूँ, और ball of half centered at Y naught intersection this T of X whenever norm of X is less than equal to 1 by beta, ये जो है ये phi होगा, मतलब there can be nothing within the half ball, oh sorry यहाँ Y naught है, ठीक है, क्या हाँ, there can be nothing within the half distance of this Y naught, where Y naught is this, that has also this property that norm X is less than equal to 1 by beta. यानी उसकी range में कोई within this कोई भी Tx doesn't lie within the half ball of Y naught, यानी उससे बाहर है. half ball of Y naught का मतलब ये पता है ना तुम्हें? चलो इसका मतलब है all Y belonging to Y, चलो such that चाहे हम X में हैं, हम किधर हैं? ठीक है, Y minus Y naught is strictly less than half. तो इसी को दूसरी सेट थ्योरी की लैंग्वेज में हम कर रहे हैं, ठीक है? So let's keep it that way. Now I can go using the Han-Banach theorem. Now B half of Y naught जो है, it's an open set, it's an open ball, is a non-empty. Non-empty तो होती है वो ball क्योंकि उसमें center तो हो गई. Is a non-empty. Convex भी है, open balls are convex. Open subset
of y and ये जो tx है, tx जो है such that norm x is less than equal to beta is also a non-empty convex subset of y oh sorry यहाँ 1 by beta है y disjoint from this convex set. इन्हें तुम्हें पता है ना हान-बनाक थ्योरम क्या कहता है? That if you have two non-empty disjoint convex sets, one of them is open, then you can find a real hyperplane that separates the two. तो वही हम यहाँ यूज करेंगे. अब इसमें इतना ही है कि ये कॉन्वेक्स है, तो ये छोटा सा तुम होम असाइनमेंट कर लो. एक्चुअली it says T is linear and this is an open ball, so a linear map would send convex sets to convex sets. तो वही होगा इसमें यूज, तुम कर लेना. होम असाइनमेंट ये जो tx है, होम असाइनमेंट क्या है तो 2 लाइंस का है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन तुम खुद देख लेना that this is indeed convex. Okay. So by Hahn-Banach theorem, I can find a functional that separates the two. Hahn-Banach theorem, there would exist some y star belonging to capital Y star, the function on y, such that, should I write it? मैंने y star नहीं लिखा है, वो f लिखा है. So there must be a reason. चलो f ही लिखते हैं इसका नाम. But what is in a name? And of course, T belonging to R. Next page पे जाना पड़ेगा. चलो, but it is understood. ये हम कर चुके हैं कई बार. That is real part of f of y naught जो है is less than t, which is less than equal to real part of f of dx for all x belonging to x with norm x is less than equal to 1 by beta. ठीक है. अब let, हाँ इस वजह से नहीं किया है, y star be equal to minus है. अब चूंकि अगर f फंक्शनल है, फंक्शंस फॉर अ वेक्टर स्पेस, तो y स्टार भी एक फंक्शनल होगा. और अगर t रियल नंबर है, तो अगर मैं s को लेता हूँ माइनस t, वो भी रियल नंबर है. So you can just multiply throughout by minus and use the fact that f is linear. So you will get this thing. You will basically get, so that क्या होगा, real, ये उल्टा हो जाएगा. Real part of y star applied to tx is less than equal to s, which is less than real part of y star applied to y naught. I think this is what it is. Okay, हाँ बिल्कुल सही है. Now this is true for, इसमें थोड़ा सा x with ये साथ में है norm x is less than equal to 1 by beta. Okay, so we further do, मतलब हम इसको और करेंगे, मतलब रिप्लेसिंग, मतलब एक साथ हम कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा अगली हो जाता है. रिप्लेसिंग अगेन x by signum of y star into t of x. Y star applied उसका signum, number का signum, which would be a complex number at most, multiplied by x. A number multiplied by x. You have to remember that signum of any number x जो है, it is defined to be 0 if x is 0. Otherwise, it is modulus of x by x if x is not equal to 0. इसका मतलब या तो ये 0 होगा या प्लस माइनस 1. ठीक है. तो ये जो नंबर है, यानी उससे नॉर्म या तो 0 हो जाएगा लेंथ, या फिर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि +1 और -1 से मल्टीप्लाई करने से लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी. मेरे कहने का मतलब है, अगर नॉर्म ऑफ x is less than equal to 1 by beta, then of course this thing would also be less than equal to 1 by beta. यानी this doesn't change. अगर मैं x को इससे रिप्लेस करूं,
लेकिन अगर मैं x से इसको रिप्लेस करता हूँ तो उससे थोड़ा सा हमें मतलब we can sort it out better. So ये बन जाएगा y star of t of क्या होगा सिग्नम y star applied to tx यानी इसका सिग्नम इस नंबर का सिग्नम multiplied by x थोड़ा सा ये आ गया इसका ये आ गया इसका ये आ गया इसका is less than equal to s less than real part of y star at y naught. Right. For all x belong जो भी है अपना ये तो पता ही है कितने मार्क रिपीट करें. अब देखो क्या होगा ये जो है ये नंबर है और ये दोनों लीनियर मैप्स है तो ये आ जाएगा बाहर यानी you will get real part of y signum of number बाहर because it is linear y star of tx multiplied by y star of t of x is less than equal to s is less than equal to real part of y star. यानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा अगर x का मतलब इस कंडीशन पे सिग्नम ये नंबर लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता because it could be either plus minus 1 or 0. Now what would be signum of x into x? यहाँ से देख लो या तो 0 होगा फिर तो कोई बात ही नहीं लेकिन it would be modulus of x. Modulus. It should be real part of good. It should be real part of mod x. That is just mod x because real part of modulus real part of the real number is real number. It's the same number. That is you should have y star applied to tx. So that's what we wanted. लेकिन अभी भी थोड़ा सा हमें इसमें करना पड़ेगा. Is less than y star applied to y naught. Should I write like this? Real part. Real part is less than. देखो मैं ये हटा सकता हूँ क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ये मॉडुलस है. उसका मतलब ये जो है देखो रियल पार्ट ऑफ एवरीथिंग इज लेस देन इक्वल टू इट्स मॉड राइट लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है ना तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ रियल पार्ट लेकिन चूंकि यहाँ पे अब ये पॉजिटिव है ना स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन समथिंग व्हिच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ समथिंग सो दिस हैज टू बी नॉन नेगेटिव देयरफॉर दिस हैज टू बी पॉजिटिव तो मैं मॉड हटा सकता हूँ. नाउ दिस इज ट्रू फॉर ऑल x belonging to x with norm of x less than equal to 1 by beta. अब थोड़ा सा हमें इसके बाद और इसको चेंज करनी पड़ेगी इसको ठीक फॉर्म में लाने के लिए. Again replacing what I do. थोड़ा मैं यहाँ लेटर भी चेंज कर दूंगा ताकि कंफ्यूजन हो जाता है. Replacing x by z by beta. तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे क्या z by beta पे भी यही कंडीशन लगानी पड़ेगी. So I would get t star actually क्या था वो y star t of x जो है is less than equal to तो मैं ऐसे लिखता हूँ मैंने चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं. चलो y star t applied to z by beta is less than equal to s is less than equal to real part of y star क्या मैंने लिखा है चलो मैंने वहां हटा दिया था चलो लगा के रखते हैं क्योंकि लास्ट पे हम इसको हटा देंगे although it's not such a big deal अभी तुम देखोगे ये उतना मसला नहीं है हमें बेसिकली चाहिए था this is bigger than that no issue. चलो रियल पार्ट ऐसे ही रखते हैं आगे हम हटाएंगे ताकि वैसे इसको हटाना ही है अल्टीमेटली मेरे कहने जो मैंने वहां किया था ओके ऐसे ही रखते हैं. now when it's true this is with देखो ये ट्रू था जो अंदर डोमेन है ना x ये शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 by बीटा तो यहाँ पे होना चाहिए विद z by बीटा जो है इन नॉर्म शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 by बीटा दैट इज नॉर्म ऑफ z शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 ये हम चाहते थे बेसिकली. So it implies that using the linearity or using the definition of the adjoint, this is actually t star, y star. ये मैं करना चाहता था. साथ में मैंने अब यहाँ दो स्टेप्स किए. एक तो linearity से बीटा को बाहर निकाला और फिर adjoint की definition यूज की. I hope that's clear. Is less than equal to बीटा से throughout multiply. Beta s is strictly less than
बीटा इंटू रियल पार्ट ऑफ वाई स्टार एट वाई नॉट, एक्चुअली जो मैंने पहले किया था वो मैं यहाँ कर देता हूँ, विच इज लेस देन इक्वल टू बीटा इंटू मॉडुलस ऑफ वाई स्टार एट वाई नॉट, और विच इज लेस देन और इक्वल टू, मैं फर्दर कर सकता हूँ, बीटा इंटू नॉर्म ऑफ वाई स्टार इंटू नॉर्म ऑफ वाई नॉट। ठीक है, सो दैट इज सो फार आई हैव गॉट टी स्टार वाई स्टार applied to z is less than, strictly less than, beta into norm of y star into norm of y naught. ठीक है, so what we do, लेकिन norm of y naught जो है ना, that is less than equal to 1. yes, norm of y naught जहां हमने लिया था, this is less than equal to 1. okay, कहाँ गए, oh हाँ, so this is actually less than beta into norm of y naught. Now this is true for all norm z less than equal to 1, taking supremum over norm z less than equal to 1, you would get norm of t star at y star, क्योंकि राइट हैंड साइड पे अब z का कोई कनेक्शन नहीं है, so it is strictly less than beta times norm of y naught for some y naught जो है, नहीं मैंने गलत लिखा, y star है, नॉट खत्म हो गया था, नॉट तो खत्म हो गया था क्योंकि वो 1 था, सो हमारी एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो बट दिस जो है बीटा टाइम्स वाई स्टार इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी स्टार वाई स्टार, है ना, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल, मतलब सिंस टी इज स्टार इज या बाई स्टार, टी स्टार इज बाउंडेड बिलो जो हमने एज्यूम किया था ये उसको वायलेट कर, तो इसमें हमें इतना एक कॉन्ट्रडिक्शन, a number cannot be strictly less than itself, a contradiction, so that proves our claim. ये थोड़ा लंबा था, that proves our claim, so that proves our claim, क्या था वो, अब क्योंकि उसमें टाइम हो गया था मैं इसको रिपीट करता हूँ, for y belonging to y with norm y less than equal to 1, there exists an x belonging to x such that norm of x is less than equal to 1 by beta, and norm of y minus t of x is strictly less than 1 by 2. ठीक है, अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, that is if we let u equal to the unit open ball y belong to y such that norm y is strictly less than 1, and v को अगर हम मान लें set all tx's such that x belongs to x and norm of x is less than 1 equal to 1 by beta, we have shown that then हमने प्रूव किया है u is contained in v plus 1 by 2 of u. ठीक है, तो reason is this, अच्छा, because if y belongs to u, यानी अगर y की ये प्रॉपर्टी है, then you would have norm of y minus tx जो है वो less than equal to half है, which means that y minus tx जो है वो belong करता है, उसकी जो length है वो less than half है, so it should belong to 1 by u, which means that y must belong to tx plus 1 by 2u, which does belong to tx तो v में है, tx तो v में है, v plus 1 by u, और यहाँ पे हम लिखेंगे tx belongs to v, obviously तभी तो ये सिचुएशन है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक कंक्लूजन ये होगा कि v would be, u जो है सबसेट है, ये ओपन यूनिट बॉल जो है, it would be contained in v plus 1 by u, and again I remind you, मतलब again मैं ये बताना चाहूंगा
दिस इज जो हम ओपन मैपिंग क्लोज ग्राफ थ्योरम है उसमें ये इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर तुम उसको फिर से देखोगे it would be a good thing. So once I am done that, अभी हमारा खत्म नहीं हुआ. Now we claim that there exists a sequence inside V. Let me give sequence का कुछ नाम देते हैं. n runs from 1 to infinity. Contained inside V, we can find a sequence such that, again, this is basically because of the metric space structure. Let me remind you again, such that Y minus the finite sum Y1, V1 plus V2 by 2 plus so on and so forth, Pn by 2 raised to power n minus 1, okay, belongs to 1 by 2 raised to power n into U. Well, this can be easily proved. Can it be? Yes. ठीक है. So this can be easily proved. वो कैसे? Just induction से. Using the fact that this is true. देखो, अगर मैं यहाँ थोड़ा hint दूँ तुम्हें, इसको as a home assignment करो. It can be proved by induction. लेकिन I can give you a hint. You can always do that because U is contained in क्या था? V plus half U. तो इसमें इटरेशन हो सकती है. यानी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ कि अगर Y U में है, then Y can be written as V1 plus 1 by 2 U for some U belonging to, U prime belonging to, or U prime belonging to U and V1 belonging to V. That's the idea. Then क्या होगा? Then Y minus V1 जो है, that is equal to 1 by 2 U dash. Now this means that this belongs to, now U dash जो है वो belong करता है U में, but U is contained in V plus 1 by 2 U. So it means U dash can be written some V2 times plus 1 by 2 times U double dash, where U double dash belongs to U. यानी just substitute here U dash की जगह, यानी Y minus U1 V1 sorry minus 1 by 2. You can U dash को अगर substitute करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 by 2 V2 plus 1 by 2 U double dash. यानी you can write Y minus V1 minus 1 by 2 V2 is equal to 1 by 4 U double dash, which belongs to 1 by 4 U. है ना? मतलब इंडक्शन जैसा कुछ लग रहा है ना? Now U double prime belongs to, you just apply that process तो तुम्हें वो सीक्वेंस मिल जाएगी. तो मैंने एक्चुअली सारा बता दिया, इसमें होम असाइनमेंट तो कुछ रहा. ठीक है? So once you have done that, okay, so I have found that, अब देखो V क्या है, मैं फिर से रखूंगा. U is the unit ball, open unit ball, यानी it was that Y belonging to Y such that, I hope that's it, norm of Y is strictly less than 1, and V जो है, it is the image of this open ball centered at origin, and मैं चाहता हूँ इसको तुम ठीक से नजरों में जमा लो. मतलब that's the, मैंने कहा ना, that's the idea basically. So I have shown that there exists a sequence inside V. मैंने लिखा कहीं पे वो, हाँ, मैंने एक sequence ऐसे ढूंढ सकता हूँ such that this belongs here, and it belongs here means it is becoming smaller and smaller in length. यानी actually this would converge to this series. Okay, that's the idea. Okay. Okay, but ये जो Vn है, क्योंकि V इसके अंदर है, ये Vn इसमें है, ये सीक्वेंस, it would be equal to some T of xn with norm of xn less than equal to 1 by beta.
Once I am there, we are done. Also, and norm of y minus, अगर मैं लूँ इसका infinite sum, summation n runs from 1 to infinity. Vn divided by 2 raised to power n minus 1. ये जो ये सीक्वेंस है, मतलब ये वही है. दिस इज एक्चुअली द मतलब सीक्वेंस को मैंने सीरीज की तरह बना दिया. This would go to 0 as n approaches infinity. Why? Because this is contained inside. चलो मैं, what does this mean as n approaches infinity? तो मैं यहाँ लिखूं कि तुम खुद समझ जाओगे. मेरे कहने का मतलब है, नहीं, I should write here. चलो मैं लिखता हूँ बजाय इसके k runs from 1 to n. चलो वो सही है. हाँ ये सही है, क्योंकि this thing belongs to 1 by 2 raised to power n plus 1 into u. इसका मतलब ये जो अंदर का है, इसका नॉर्म जो है, it is less than equal to 1 by 2 raised to power n plus 1. By this u क्या है? So which would go to 0 as n approaches infinity. So we can write ये जो, so we can write y को हम लिख सकते हैं as a summation k runs from, या n runs from 1 to infinity. Sure, मैं infinity कर सकता हूँ इसको. Vn divided by 2 raised to n minus 1, which is the same thing as summation n runs from 1 to infinity t of xn divided by 2 raised to power n minus 1 with, of course, norm of t of xn जो है, that is less than me. Norm of xn जो है, that is less than equal to 1 by beta, क्योंकि फिर वरना तो कुछ और करना है. So far I have found something y which has this property, which can be written as an infinite sum of the images of txn's contained in this unit ball. मतलब यहाँ पे x है, सॉरी फिर से मैंने कहा, हाँ जो पहले मैंने लिखा था वो सही था, यहाँ थोड़ा जल्दी. ओके, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था. Okay, once I've done that, now also summation n runs from 1 to infinity. Norm of xn divided by 2 raised to power n minus 1 is less than equal to, क्योंकि ये सारे के सारे less than equal to beta है, oh sorry 1 by beta, 1 by beta है ना शायद, हाँ 1 by beta है, which is some fixed number. Summation n runs from 1 to infinity 1 by 2 raised to power n minus 1, which is actually beta, because this is a convergent series whose sum is 1, which is less than infinity. So this is convergent as a sequence of numbers. Also, X is a Banach space. It implies that summation xn divided by 2 raised to power n minus 1, n runs from 1 to infinity, converges in x. तो यहाँ पे हमने यूज किया, जो कि मुझे लगता है मैं देता हूँ ये फॉर्म असाइनमेंट वैसे फंक्शन एनालिसिस 1 में, वो ये है, a normal linear space is a Banach space if and only if summation xn converges is a Banach space if and only if, हाँ ठीक है, is a Banach space ऐसे. हाँ मैंने क्या लिखा है, हाँ ऐसे. So a normal linear space would be a Banach space if whenever this converges, this converges. अगर ये converge करेगा तो ये converge करेगा. ये तुम कर लो as a home assignment, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, easy है, बहुत easy है actually. So therefore अगर ये converge करता है, so therefore there exists an x belonging to x such that I can write x as this infinite sum. That's the meaning actually. And we are done basically. And t of x इसके बराबर है, t of x would be t of this sum. Which can be written as summation n runs from 1 to infinity
T of xn divided by 2 raised power n minus 1. Why? Because t is linear and continuous. ठीक है, हम लिमिट को बाहर निकाल सकते हैं, फिर सम को बाहर निकाल सकते हैं. So अगर which is actually equal to this y, अगर हम पीछे देखें तो y इसी के बराबर तो था. So हमने क्या किया फिर? We have shown that whenever y belongs to V, then it has a pre-image. And if y belongs to the range, और y कहाँ belong करता है? Y belongs to V, and what is V? V is the open unit ball. कहाँ गया हमारा? V यानी U. X U में था, हाँ, Y U में था. बिल्कुल, मैंने यहाँ लिख लो let y belong to U. ये मैं भूल गया, हालांकि मैं यहाँ मैंने लिख चुका हूँ y belongs to U. तो यहाँ as a part of this proof, तो y belongs to U means this thing, और मैं दिखा चुका हूँ there exists some x such that tx is equal to y. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है y belongs to range of t. अरे यार, अब खत्म हो गया वैसे. It implies that y belongs to range of t, which means that ये जो हमने लिया था y belongs to y, such that now y is strictly less than 1, belongs to range of t, but range of t, R of t, is a subspace. Hence it follows that t of x, या range of t, must be the whole space y, which implies that t is surjective. जो हमें प्रूव करना था, यहाँ हमने यूज किया था. अब चलो ये होम असाइनमेंट में ले, छोटी सी होम असाइनमेंट एक्चुअली. Proper subspace of a normal linear space is nowhere dense. ये दो लाइन्स का है. तो of a normal linear space x is nowhere, मतलब अगर प्रॉपर ये सबस्पेस तो है, अब ये तो प्रॉपर सबस्पेस अगर होती तो इट कैनॉट कंटेन एन ओपन सेट, एन ओपन बॉल, और हमने प्रूव किया ये एक ओपन बॉल को कंटेन करती है. सो इट कैनॉट बी अ प्रॉपर सबस्पेस, इट मस्ट बी इक्वल टू द होल स्पेस, बिकॉज अ प्रॉपर सबस्पेस इज nowhere dense. It never contains an open ball or any open set of the bigger space. So that finishes this लंबा चौड़ा theorem. Okay, let's close this. अच्छा, कोई क्वेश्चन? अभी टाइम है हमारे पास 4-5 मिनट, 6 मिनट. Any question? 22 students. हाँ, anybody awake? यासिर तो डेफिनेटली सो रहा है, टोपी लगा. सच में सभी सो रहे हैं. हेलो, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा.